Hello students. This is the last lecture for the unit radioactivity for Pharmaceutical Inorganic Chemistry BP 104T. So, in this particular topic I will be discussing about the radio opaque contrast media. So, what is opaque actually? Opaque is something which allows one to pass and will restrict the other thing. तो ओपेक रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो है इट इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन और वन ऑफ द यूज़ ऑफ द रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स एज अ डायग्नोस्टिक टूल. तो जो रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट मीडिया है उसे हम एज अ डायग्नोस्टिक टूल जो है हम क्या करते हैं उसको यूज़ करते हैं. So, you will understand much better in the coming slides, and I have also added one video related to this radio opaque contrast media, which will help you to understand better that how these radio opaque contrast media are used for the contrast imaging. So, what are contrast materials? So, contrast materials or the contrast agents or the contrast media, these are the different three terms which are being used. They are used to improve the pictures of the inside of the body. It is can be produced by X-rays or by the computed tomography, CT scan, or by the magnetic resonance imaging, that is MRI, or even ultrasound. तो जो contrast materials होते हैं there are radiologist. Radiologist क्या है? Radiologist they are the person who work with the radioactive compounds for the diagnosis purpose or other related purpose. So, what does this radiologist do? Radiologist जो क्या करते हैं वो normal और abnormal condition को जो है distinguish करते हैं. So, there are MD radiologist person or with the DMRD also who are specifically qualified enough to give a report regarding the condition of a patient after using this diagnosis. So, contrast materials they are not dyes. So, just do not get confused that they are like dyes. They are not dyes that permanently discolor the internal organs, but they are the substances that temporarily change the way X-rays or other imaging tools interact with the body. तो dyes क्या करेंगी वो परमानेंट जो है कलर चेंज करती हैं, लेकिन जो कॉन्ट्रास्ट मटेरियल्स है जो हम लोग यूज़ करते हैं वो परमानेंट कलर चेंज नहीं करता, पर सिर्फ उतने ही टाइम के लिए जितनी देर के लिए हमें इमेजिंग करनी है सिर्फ उतने ही पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वो क्या करेगा उसे टेम्पररी चेंज करता है. सो दे आर नॉट एट ऑल डाइज. तो कॉन्ट्रास्ट मटेरियल हाउ डू दे वर्क एक्चुअली? तो जब हम उन्हें बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं प्रायर टू एन इमेजिंग एग्जाम, सपोज अफ देयर इज अ पर्सन टू हुम वी हैव टू परफॉर्म अ सिटी स्कैन, तो क्या करेंगे वो प्रॉपर सिटी स्कैन से पहले जो है हम उनकी बॉडी में जो है इस कॉन्ट्रास्ट मटेरियल को जो है इंट्रोड्यूस कराते हैं. तो ये क्या करेगा इट विल मेक सर्टेन स्ट्रक्चर और टिश्यूज इन द बॉडी अपीयर डिफरेंट ऑन द इमेजेस देन दे वुड इफ नो कॉन्ट्रास्ट मटेरियल हैड बीन एडमिनिस्टर्ड. तो क्या होता है कि जो उससे इमेज आती है वो डिफरेंट आती है इन कंपैरिजन टू अगर हम उसको कोई भी कॉन्ट्रास्ट मटेरियल नहीं देते हैं, और जो इमेज आती है वो बहुत क्लियर आती है जिसकी वजह से बहुत इजीली मतलब आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. द रेडियोलॉजिस्ट कैन इजीली डिस्टिंग्विश बिटवीन अ नॉर्मल कंडीशन एंड एन एबनॉर्मल कंडीशन. तो जो कॉन्ट्रास्ट है मटेरियल्स हैं वो क्या कर रहे हैं दे आर हेल्पिंग टू डिस्टिंग्विश और contrast the selected areas of the body from the surrounding tissue. For example, we have to do the for brain, if we have to do the imaging, then they will contrast the brain from the other areas of the body. So, it will provide the clear imaging of the brain and it will help to distinguish from the other tissues. So, इससे क्या होता है जब ये body imaging जो है improve होती है, the visibility जो है specific organs की, even blood vessels की और टिश्यूज़ की जो है वो क्या होती है विजिबिलिटी बहुत अच्छी इंक्रीज़ हो जाती है. तो जो कॉन्ट्रास्ट मटेरियल्स हैं जो फिजिशियंस हैं या फिर जो रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर्स होते हैं उनको हेल्प करते हैं टू डायग्नोज द मेडिकल कंडीशंस. सो दे आर बीइंग यूज्ड एज अ डायग्नोस्टिक टूल. तो कॉन्ट्रास्ट मटेरियल हमें सबसे पहले क्या करना है पर्सन को जो है हमें कॉन्ट्रास्ट मटेरियल पहले एडमिनिस्टर करना है. हम अब उसे किस तरीके से एडमिनिस्टर कर सकते हैं? देयर आर 3 डिफरेंट वेज
To administer the contrast material, first is swallow. Simply, अगर if a person is quite in a healthy condition and is not unconscious, so normally हम उसको swallow करने के लिए by orally क्या कर सकते हैं, through mouth जो है उसको हम दे सकते हैं. Second, it can be also administered by enema, which is rectally. Next, it can also be injected into a blood vessel. It can be injected into veins or artery. तो इसे हम intravenously भी दे सकते हैं और intra-arterially भी दे सकते हैं. तो especially for those patients who are not in a conscious condition or who are unconscious or under coma or there may be some accidental cases also. तो उस केस में अगर हमें उनका imaging करना है तो we can administer these contrast materials through IV और IA. सो क्या होगा, जब हम उनका इमेजिंग एग्ज़ाम करते हैं बाय यूजिंग कॉन्ट्रास्ट मटेरियल, तो जो वो मटेरियल है बॉडी उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और उसको गिवन पीरियड ऑफ टाइम के बाद में एलिमिनेट भी कर देती है थ्रू, इट कैन बी थ्रू यूरिन और बोवल मूवमेंट्स. So it's not like that if one contrast material is administered into a patient body, then it will be easily removed from the body also. So it will not create some adverse effects or some side effects. So what are the ideal properties of a contrast agent? तो एक contrast agent जो हम use कर रहे हैं उसकी ideal properties क्या होनी चाहिए? First is safe. It should be safe. इसमें कोई भी patient पे कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होना चाहिए. देन इट शुड बी नॉन टॉक्सिक ऑल्सो. इट शुड नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर. जो ब्लड ब्रेन बैरियर है जो है उसको जो है वो कॉन्ट्रास्ट मटेरियल्स जो है क्रॉस नहीं करें. नेक्स्ट, सिमिलर जो फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, जो हमारे ब्लड की और जो हमारे सलाइवा की प्रॉपर्टीज़ है वो सिंपली होनी चाहिए कि जब हम इंजेक्ट करें तो नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू जो है वो जो है हमारी बॉडी में सर्कुलेट होना चाहिए. तो हमारे जो ब्लड पीएच जो है उसका जो है इट शुड बी कॉम्पेटिबल विद आवर ब्लड. तो उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होनी चाहिए एज दैट ऑफ ब्लड एंड सलाइवा. इट शुड बी इनर्ट एज सच. उसकी कोई भी जो है फार्माकोलॉजिकल कोई भी जो है एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए हमारी बॉडी के ऊपर. और इन ओपेसिफिकेशन, ओपेसिफिकेशन मतलब कि जब इमेजिंग आए देन इट शुड बी क्लियर. एक हमें क्लियर इमेज जो है वो प्रोवाइड करे बाय अलाउइंग द रेज टू पास थ्रू. ईजी इंजेक्टेबिलिटी, अगर हम उसे इंट्रावीनसली या इंट्रा आर्टरीली अगर हम दे रहे हैं तो इंजेक्टेबल, अगर हम उसे फॉर्मुलेशन में दे रहे हैं तो इट शुड बी ईजीली इंजेक्टेबल. एलिमिनेशन मैंने बताया क्योंकि इट शुड नॉट रिमेन इन द बॉडी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो एलिमिनेशन इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, क्योंकि अगर बॉडी में ज़्यादा लंबे टाइम के लिए रहेगा देन इट कैन शो सम इफेक्ट. तो इट शुड हैव अ गुड एलिमिनेशन, मतलब बॉडी से जो है वो ईजिली जो है एलिमिनेट आउट हो जाए. कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, बिकॉज इफ इट इज़ कॉस्टली तो जो डायग्नोसिस प्रोसीजर का जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा. उसका सरफेस टेंशन भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए. तो कॉन्ट्रास्ट मटेरियल में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कॉन्ट्रास्ट मटेरियल विच आर यूज्ड. फर्स्ट है आयोडीन बेस्ड एंड बेरियम सल्फेट. बेरियम सल्फेट बहुत ही कॉमन कॉन्ट्रास्ट मटेरियल है जो यूज़ करते हैं इन एक्सरे और इन कंप्यूटेड टोमोग्राफी, दैट इज सिटी स्कैन, इमेजिंग एग्जाम्स जो है करने के लिए. कॉन्ट्रास्ट मटेरियल्स जो हैं इनका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है दैट इंक्लूड्स आयोडीन. ये नेचुरली अकरिंग केमिकल एलिमेंट है जो हमारी बॉडी में भी जो है प्रेजेंट है. तो जो ये कॉन्ट्रास्ट मटेरियल्स हैं दे कैन बी इंजेक्टेड इनटू वेन्स और द आर्टरीज. तो विद इन द डिस्क और फ्लूइड स्पेसेस में रहते हैं हमारे स्पाइन के और इनटू द अदर बॉडी कैविटीज़. बेरियम सल्फेट, इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉन्ट्रास्ट मटेरियल विच इज़ टेकन बाय द माउथ और ओरली जो है इजीली हम इसको जो है किसी भी पेशेंट को एडमिनिस्टर कर सकते हैं. इवन रेक्टली भी कर सकते हैं. इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन अदर डिफरेंट फॉर्म्स लाइक पाउडर. तो पाउडर की फॉर्म में है तो हम उसे पहले मिक्स करते हैं वाटर के साथ में बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन. एंड इवन इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ लिक्विड, पेस्ट एंड टैबलेट. क्योंकि बेरियम सल्फेट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कॉन्ट्रास्ट मटेरियल, सो इट इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट फॉर्मुलेशंस. जो आयोडीन बेस्ड और बेरियम सल्फेट कॉन्ट्रास्ट मटेरियल होते हैं दे आर प्रेजेंट इन अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ द बॉडी. सो दे ब्लॉक और लिमिट द एबिलिटी ऑफ द एक्स रेज टू पास थ्रू. जो कि मैंने अभी बताया था कॉन्ट्रास्ट मटेरियल जो है
कुछ को तो अलाउ करेंगे रेस पास करने के लिए, बाकी को नहीं करते हैं। तो क्या करेंगे, ये ब्लॉक करते हैं या लिमिट करते हैं एक्सरेज की जो एबिलिटी है, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं है कि प्रॉपर ही एकदम पास हो गया, उसको ट्रांसपेरेंट नहीं बोलेंगे, उसे हम वो क्या बोलते हैं, ओपेक। ओपेक मतलब ये ब्लॉक कर देगा, तो उसकी वजह से हमें जो इमेजिंग है वो क्या आती है, एकदम प्रॉपर आती है। तो क्या होगा, जब कॉन्ट्रास्ट मटेरियल किसी भी पेशेंट को एडमिनिस्टर किया है, बाहर से हम कोई एक्सरेज दे रहे हैं, तो जो वो कॉन्ट्रास्ट मटेरियल है वो उस रेज को जो है थ्रू आउट द बॉडी जो है पास नहीं होने देगा, ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेगा, बल्कि वो क्या रखेगा, उसे ओपेक, तो वो स्टॉप कर देगा, जिसकी वजह से जो है हमें इमेजिंग जो है बहुत क्लियर आती है। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, और इवन जो अदर बॉडी टिश्यू हैं जिनमें टेम्परली आयोडीन बेस्ड या हमने बेरियम कंपाउंड्स दिए हैं, उनकी जो अपीयरेंस है, जो इमेज है उनकी एक्सरे और सिटी इमेज में, वो चेंज हो जाती है। देयर इज़ वन अदर कॉन्ट्रास्ट मटेरियल ऑल्सो, गैलोडीनियम। ये की कंपोनेंट है कॉन्ट्रास्ट मटेरियल का, जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस एग्जामिनेशंस के लिए। तो जब ये सब्सटेंस बॉडी में प्रेजेंट होता है तो ये क्या करेगा, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि मैंने अभी बताया मैग्नेटिक रेजोनेंस है, तो मैग्नेटिक एमआरआई में हम क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ अ मैग्नेटिक फील्ड, वी यूज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो जो गैडोलिनियम है वो क्या करेगा, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है नियर बाई जो वाटर मॉलिक्यूल्स है हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, उनकी प्रॉपर्टी को ये क्या करता है, ऑल्टर कर देता है, जिसकी वजह से जो एमआर इमेजेस है वो बहुत क्लियर आती है। क्योंकि एमआरआई इमेजिंग में जो है वी यूज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द रीज़न while a one person is entering into a MRI room, they are not allowed to wear anything that is related to metals. तो आप they cannot wear belts, they cannot even carry their wallets or the coins along with them or any sort of ornaments, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो इस वजह से वो अलाउ नहीं होता है। सेलाइन, इवन नॉर्मल जो है हम सॉल्ट वाटर भी यूज़ करते हैं, इवन हम जो गैस है सच एज एयर है उसको भी हम यूज़ करते हैं एज कॉन्ट्रास्ट मटेरियल इन इमेजिनिंग एग्जाम्स। तो माइक्रो बबल्स और माइक्रोस्फीयर्स भी हैं, इनको एडमिनिस्टर करते हैं फॉर अल्ट्रासाउंड इमेजिंग एग्जाम्स, particularly for the examination of heart. I will discuss later that what are these micro bubbles. So now next is what are oral contrast agents. मैंने अभी बताया कि जो contrast agents को which we administer orally, they are known as oral contrast agents. तो बेरियम सल्फेट जो है, it is a very good contrast material which can be swallowed or administered by the mouth, और इसे हम एक्सरे और सिटी इमेजेस के लिए, जीआई ट्रैक्ट की इमेजिंग के लिए, इवन फेरिंग्स, ईसोफेगस, फूड पाइप जो है, स्टमक, द स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, कॉलन, ऑलमोस्ट हम ऑल सब बॉडी ऑर्गन्स के लिए इनको यूज़ कर सकते हैं। इन सम सिचुएशंस वी यूज़ आयोडीन बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मटेरियल्स, they are being substituted for barium sulfate contrast material for oral administration, स्पेशली अगर हमें थायराइड ग्लैंड का करना है तो हम वहाँ पे we will use iodine in place of the barium sulfate. Next is your rectal contrast materials. तो barium sulfate it can also be administered rectally, it also comes in the form of a enema. So enema में क्या है, rectally जो है पेशेंट को इसे एडमिनिस्टर करेंगे। तो स्पेशली हम रेक्टल जो रूट है वो कब प्रिफर करते हैं, रेक्टल रूट हम तब प्रिफर करते हैं जब हमें सिटी इमेजेस चाहिए होते हैं लोअर जीआई ट्रैक्ट का, या हमें कॉलोन का या फिर रेक्टम का जो है अगर हमें इमेजिंग चाहिए, तो उस केस में जो है हम पेशेंट को बेरियम सल्फेट रेक्टली जो है एडमिनिस्टर करेंगे। कुछ इन सम ऑफ द सिचुएशन वी कैन यूज़ आयोडीन बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मटीरियल, उनको हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं फॉर बेरियम सल्फेट कॉन्ट्रास्ट मटीरियल्स फॉर द रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन। Next, your mode of administration is IV, that is intravenous contrast materials. Intravenous contrast materials, there are iodine based, गैलोडीनियम बेस्ड है, आयोडीन बेस्ड मतलब कॉन्ट्रास्ट मटेरियल्स हैं जिनको हम इंजेक्ट करते हैं इनटू द वेन्स, एंड दे आर यूज्ड टू एनहेंस द एक्सरे एंड सिटी इमेजेस। तो जो गैडोलिनियम है उसको हम इंजेक्ट करते हैं इनटू अ वेन, दैट इज़ योर इंट्रावीनसली। तो ये एमआर इमेजेस को क्या करता है, ये एनहेंस करता है। टिपिकली हम इन्हें इंटरनल ऑर्गन्स की इमेजिंग के लिए जो है हम यूज़ करेंगे, जैसे कि हार्ट है, लंग्स हैं, लिवर, योर एड्रेनल ग्लैंड्स, किडनीज, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, यूट्रस, ब्लैडर एंड जीआई ट्रैक्ट, तो इंक्लूडिंग योर स्टमक। तो इट कैन बी यूज्ड फॉर द इमेजिंग ऑफ ऑलमोस्ट एवरी ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी।
So including even the vessels, the blood vessels also in the brain and the neck, chest, abdomen, in order to study whether the blood circulation or the blood flow is taking properly or not. The legs, soft tissues of the body including the muscles, fat and skin, brain, breast. So almost each and every part of our body we can use the intravenous contrast materials for a good imaging. Now microbubble contrast materials, what are these micro? Microbubble means, micro means small in size. तो जो microbubble contrast materials होते हैं, they are tiny bubbles, small, बहुत छोटे छोटे bubbles होते हैं of an injectable gas. इनको एक supporting shell में जो है हम इसे hold करके रखते हैं, बहुत small होते हैं, even smaller than that of a RBC, जो red blood cell है उससे भी small होते हैं size में, लेकिन इनकी जो इकोजेनेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है. इकोजेनेसिटी मतलब जो अल्ट्रासाउंड वेव्स है, क्योंकि हम स्पेशली इन्हें अल्ट्रासाउंड्स के लिए यूज़ करते हैं, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग के लिए, तो ये अल्ट्रासाउंड वेव्स को क्या करते हैं, बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करते हैं. तो जब हम उन्हें कॉन्ट्रास्ट के साथ में, कॉन्ट्रास्ट मीडिया के साथ में जब हम एनहेंस करते हैं अल्ट्रासाउंड को यूजिंग अ माइक्रो बबल, तो ये बहुत कन्वीनियंट है और रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव वे है to improve the visualization of blood flow that does not use radiation. तो हमें इस केस में कोई रेडिएशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. यूज़फुल ऑप्शन है उन पेशेंट्स के लिए, फॉर एग्जांपल इफ़ दे आर हैविंग अ किडनी फेलियर है तो उस केस में क्या होगा कि ईजिली जो है वो एलिमिनेट नहीं होगा बॉडी से. अगर इफ वन पर्सन किडनी इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली देन एलिमिनेशंस बिकम डिफ़िकल्ट. या फिर एलर्जी है टू MRI और CT, तो उस केस में अगर हमें उनका अल्ट्रासाउंड करना है देन वी कैन यूज द माइक्रो बबल कॉन्ट्रास्ट मटेरियल्स इन दैट केस. सो हियर आई वुड लाइक टू शेयर वन वीडियो विद यू which will help you to understand much better that how this barium sulfate is being used or it's being given orally and how does it help to improve the imaging. तो क्या होगा, इमेजिंग किस तरीके से जो है इम्प्रूव होती है. Barium Swallow is an X-ray examination of the upper gastrointestinal tract. It involves swallowing a solution containing barium sulfate, a metallic compound which is easily visualized on X-ray images. Barium coats the walls of the pharynx and the esophagus and appears white on the images. It can be tracked as it moves through the digestive system by performing a series of X-rays. A barium swallow can help identify problems with swallowing and diagnose abnormalities of the esophagus and stomach. Indications: Barium Swallow test is used to diagnose the structural or functional abnormalities of the upper gastrointestinal tract, such as swallowing disorders, narrowing or irritation of the esophagus, hiatal hernia, a defect that causes the stomach to partially slide into the chest, enlarged esophageal veins, ulcers, tumors, precancerous growths called polyps, gastroesophageal reflux disease or GERD. Pre-Procedural Preparation. You will be asked to consume a low-fiber diet for 2 to 3 days before the test. Your doctor will advise you to stop smoking if you smoke and have nothing to eat after midnight before the test. Inform your doctor if you are pregnant or allergic to any medications, latex, tape, or anesthesia. Also, inform the doctor if you have undergone any barium X-ray or bile duct radiography recently. You will be asked to remove all jewelry before the test. Procedure: A barium swallow test is performed in the following manner. Standard chest and abdominal X-rays are initially performed. You will be asked to drink about 1.5 cups of the chalky barium preparation. You will lie on an X-ray table that can be tilted from a horizontal to an upright position. X-rays are obtained as you swallow the preparation and while the barium passes through your digestive system. The table will be tilted so that the barium spreads and X-rays can be captured at various angles. Your doctor may apply pressure to the abdomen to spread the barium inside. You will be asked to swallow more of the barium preparation to obtain additional images.
The Barium Swallow procedure takes about 30 to 60 minutes to finish. Post-procedural care. Following the Barium Swallow procedure, you can resume a normal diet unless your doctor advises a modified diet. You may have white or light-colored stools for 1 to 3 days. Sufficient fluids should be consumed to help flush the barium out of your system and prevent constipation. A high-fiber diet, including raw fruits and vegetables, can also prevent constipation. Risks and complications. The Barium Swallow is generally a safe test, but as with any procedure, complications may occur and can include allergic reaction or anaphylaxis, constipation, accidental entry of the barium into the windpipe. A Barium Swallow test uses X-ray imaging to aid in diagnosing abnormalities of the upper gastrointestinal tract. It is a safe procedure with minimal risks. Talk to your doctor about any concerns you have regarding the procedure. So in this particular video, they have tried to explain that how this barium sulfate is being used orally for the imaging of the GIT tract, upper GIT tract, or your esophagus and your other body organs. So प्री प्रोसीजर है एंड पोस्ट प्रोसीजर है, दोनों ही जो है इसमें इंक्लूडेड है. प्री प्रोसीजर जो है, वन पर्सन हु हैज़ टू अंडरगो दिस डायग्नोसिस, दे हैव टू टेक अ लो फाइबर डाइट एंड दे हैव टू टॉक देयर डॉक्टर रिगार्डिंग दैट. और फिर जब क्या होगा, प्री प्रोसीजर के बाद जो 1 to 2 days के बाद में जब उन्हें प्रोसीजर के लिए बुलाया जाएगा, देन दे विल बी गिवन सोल्यूशन ऑफ बेरियम सल्फेट टू swallow. तो as I have told you, they have to remove all their metals, their ornaments and all. तो उन्हें प्रोसीजर के टाइम पे बेरियम सल्फेट का सोल्यूशन दिया जाएगा विच दे विल टेक, दे विल swallow. तो उससे क्या होगा, जो उनका अपर GIT ट्रैक्ट है उसकी क्लियर जो है क्या होगा, एक जहाँ जहाँ वो बेरियम सल्फेट जो है एब्जॉर्ब होगा उसकी जो है इमेजिंग आ जाएगी. उसके बाद में दे विल बी लाई डाउन ऑन द टेबल एंड देयर एक्सरे और देयर CT स्कैन, इट कैन बी done easily to get the proper images whether there is any disease which is related to the upper GIT tract or esophagus. उसके बाद में क्या होगा, जो बेरियम सल्फेट है इट हैज़ टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम वंस बॉडी. तो एलिमिनेट होने के लिए इट कैन टेक अप टू 1 or 2 days. तो जब एलिमिनेशन में टाइम लगता है तो then it can lead to the stools which are light in color. To avoid the constipation, the patient, they should take a very good amount of the fluid, and unless and until their doctor advise them, they should not change their diet. They should not come on a normal diet that they were taking prior to the procedure. And apart from it, if one is having any other kind of a reaction or any other kind of a body changes that they can see or feel, they should talk to their doctor. As such, there is no such side effect which is being related by using the barium sulfate as a oral contrast media. नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है, कुछ भी हम सिरिंजेस या फिर इंजेक्शंस हम कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं कर रहे हैं. तो नॉन इन्वेसिव है, सिर्फ ओरली जो है swallow करना है. इसकी वजह से क्या होता है, जो इमेजिंग है वो बहुत बेटर आती है. अगर हम कॉन्ट्रास्ट मटेरियल नहीं यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है कि विदाउट यूजिंग कॉन्ट्रास्ट मटेरियल वी कैन नॉट डू द इमेजिंग, वी कैन डेफिनेटली गो फॉर इट. लेकिन जब हम कॉन्ट्रास्ट मटेरियल यूज़ करते हैं तो कॉन्ट्रास्ट क्या करेगा, एक ना इमेज जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर आती है. तो जब इमेज बहुत ज़्यादा क्लियर आती है देन इट रियली बिकम ईजी फॉर द फिजिशियन और फॉर द रेडियोलॉजिस्ट टू डायग्नोज द प्रॉब्लम. तो प्रॉब्लम को डायग्नोज करना क्या है, बहुत ईजी हो जाता है. सो all these radioactive contrast materials or this contrast materials, they are oral contrast agents. Basically they are being used as a diagnostic tool for the radio imaging purpose. They can be used for the magnetic resonance imaging, they can be used for the CT scan, as well as they can also be used for the X-rays. But there should be some ideal properties that should be followed by any contrast agent that we are using, that it should be inexpensive, non-toxic, inert,
and it should be easily eliminate out from the body, and definitely it should not have any other pharmacological effect on the body. So, when a certain contrast agent it fulfills all these criteria, they can easily be ideally used as an oral contrast agents. Apart from the oral, they can also be used intravenously or even the rectally. Rectal administration is being used when the imaging is done for the lower GI tract or for the rectum area, then they are given rectally rather than orally. Intravenously or intra-arterially, they can be given to the patients who are unconscious, who cannot take the contrast agents orally. So, they can be given through IV or the IA medium. So, what will happen? Through the normal blood circulation, it will get concentrated on the particular area, which will help to get the image more clear. So, there are different contrast agents, as I have told you. They are barium based, there are iodine based, they are gadolinium based. Barium sulfate is being used. I have also shared one video with you. Apart from it, iodine based agents are being used specially for the functioning, to see the normal functioning of the thyroid gland. And apart from it, they gadolinium also, they can also be used for as an oral contrast agents. So, I just hope that this particular lecture have helped you to understand better regarding the contrast agents, and please refer to the previous lectures also regarding this unit 5 of radioactive compounds. All this series of 6 lectures will help you understand better the radioactive compounds, their uses and their other properties. And just to make you the better understanding of the following topics, I have also shared 2 videos with you. तो वीडियो की वजह से क्या होगा, एक चीज़ जो आप ओरली सिर्फ या फिर आप थ्योरेटिकली सिर्फ पढ़ रहे हैं उतना आपको क्लियरली नहीं समझ आती है, लेकिन व्हेन यू सी अ वीडियो तो वो इजीली इट गेट्स एनग्रॉस्ड इन योर ब्रेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. दिस इज़ द रीज़न दैट आई हैव इंक्लूडेड 2 videos specially to understand the radioactive compounds. Okay. So, I hope the lectures were informative enough for you, and thank you.